Hey, hi everyone. Good evening, everyone. How's you all? All are good, great, fine. Okay. So, dear friends, as it was communicated to you in the last class, that was last week, that today onwards we will start with permutation and combination. So, ready, everyone? So, have you all done basics? So, in fact, in our classes also we will do basics of permutation and combination. That means because there are so many topics in permutation and combination that we will cover in class 12 after the completion of syllabus. Because as you know, your curriculum is going to be end as your exams are there now. So that's why we will do the permutation and combination as we are required. Clear, dear? Yes, ma'am. Because Tanisha, if we go so much in detail, because there are so many topics that will be at the end that are JE point of too much important, but till the time we don't know the basics, all the basics of permutation combination, we can't do anything. So what we can do, firstly, we will do all the basics from permutation and combination as we required for class 11, right? So in class 12, we will do other topics. Clear? Because as much as we will do, let's do in details. Clear? Okay, ma'am. So today we are going to complete these topics. Fundamental principle of counting, that means addition principle, multiplication principle, and factorial notation. Everyone is very well known to these topics. How many of you are very well known about these topics? Raise your hands. Okay, Ronak is familiar. Okay, Tanisha is also familiar. That's great. I know everyone is familiar because it's the end of the session, so everyone already gone through. So what's the output? Do you know? Until 2022, one question was there in every exam, but in 2023, two question in each exam. See how many questions came in 24 paper. 8 questions are there in the curriculum, right? It means two questions per paper. Clear? So I guess this much is enable or this much is sufficient to show you how much important this topic is. Clear? So these are the topics that we are going to cover in upcoming sessions. Fundamental and till factorial notation with the first lecture. Then next we will do combination. Then in the next we will have some permutation problems. Clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So before moving ahead, can you read out the statement on the screen? Can everyone read out statement on the screen? Yes, ma'am. Okay. What? It's a very common statement. A, B, C are three cities. There are three routes A to B and three routes from B. So A, B, C, right? There are three cities. A to B, there are two routes. One route and another route. From B to C, there are three routes. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So they said how many routes are there from A to C via B? Two things are possible. You're saying from A to B, two routes are there. From B to C, three routes are there. One thing you can do 2 into 3, that means 6 ways are there, right? Second thing, what you can do, let's say A, this is B. This is 1, 2, and 3. So what you can do, you can say either I follow A1 route, either I follow A2 route, either I follow A3 route. In the same way, I can follow B1 route, B2 route, B3 route. So how many routes are there? 6. 6. So this is basically following the multiplication rule. You're following multiplication. Yes, ma'am. Or in this case, you are following addition rule. Clear, dear students? Yes, ma'am. So, how many of you got to know why this statement is shown on your screen? To show you the difference, Aditya, what is the difference between multiplication and addition rule, right, Tanisha?
Yes, ma'am. Okay, that's great. So let's go ahead. What is addition? What is multiplication? Very common example you have seen in your books also, that from A to B, I can travel by air, by bus. That means two modes of travel are there. From B to C, there are three modes, either air, by the rail, or by bus. So now very familiar by addition principle also, I got 6 ways. From multiplication principle also, I got 6 ways, right dear? Yes, Yes. ma'am. Okay. See, A to B, it's a well explained way for you, right? So, what is actually multiplication rule? What is addition rule? Let's come to. If an event can occur in m ways, following which another event can occur in n ways, then the total number of occurrences m into n. That was only done by you. If Yes. from A to B, I can travel by 2 modes, and B to C, I can travel by 3 modes. Then from A to C, I can go by 2 into 3, dear Bacha Party. That means 6 ways, Tanisha. Yes, ma'am. So, Avni, if I can travel, event can occur in m different ways or n different ways, but not simultaneously. Then the occur of event is m plus n. So what is the difference? When you got to know and is there, that means multiplication will happen. And when you have or in the statement, see or, that means plus will happen. Is it clear? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. That's great. See, let's I have an analysis or big explanation about this. There are 15 students in a class in which 10 are boys. If 15 students are there in which 10 are boys and 5 are girls, right? The class teacher selects either a boy or a girl for monitor of the class. In how many ways the class teacher can make this selection? Is this question is clear to you? Yes, ma'am. So what actually I need to do? Avani, what I need to focus? Ria, what I need to focus? What is the operation here? Or Aditya? Ronak? Or Ronak, or is there now? Yes, ma'am. So Rn or is there, it means 10 plus 5. So how many total ways are there? 15 ways are there only. Yes, ma'am. Option C will be the correct answer, Lohit. Neha, Yes, ma'am. right? Harshal, Sameer. Okay. This question is for you guys. A boy has 4 t-shirts, 3 pair of pants, 4 t-shirts, 3 pair of pants. Find the total number of possible outfit of the boy. Is it mentioned over there that he have to select one, or either t-shirt or a pant? Is it so? No. No. It means he have to combine both together, pant and shirt, right? So how many possible ways? 12. 12. 12. Arey, wow, so many. 12. Everyone agree on the 12? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's great. Because they said total number of possible outfits. Clearly, it's known that if we are making a combination of shirt and pant, so together we have to take in it as pair. So 4 into 3, how many ways are there? 12 ways. Clear? Option D. Right, everyone? Yes, किसी को ma'am. भी डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए. ठीक है. Let's have another question. In an ice cream parlor, wow, जहां पे ठंड नहीं होगी उनके लिए तो अच्छी चीज है. Ice cream parlor, there are 6 flavors of ice cream, 3 different cones available. In how many ways a person can order ice cream? तो फटाफट बताइए क्या लगेगा बच्चों? मैम 18. 18. क्या बात है, क्या बात है. अरे भाई आज तो फीडिंग इंडिया वाले चमक रहे हैं, चमक. ठीक है. So 18 ways is the correct answer, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी का 9 तो नहीं आ रहा? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So it means we have to do Gaurav 6 into 3. That means 18 ways. Clear to all? Yes, ma'am. Okay.
So in an event of eating a complete lunch, if one has 5 choices of the starters में क्या क्या चीजें आती हैं? भाई स्टार्टर्स में क्या क्या आते हैं? जब शादी में जाते हैं क्या क्या स्टार्टर्स होते हैं? कोई तो बता दो। आदित्य, वो मंचूरियन खाते हैं हम, स्प्रिंग रोल्स खाते हैं, कटलेट्स खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, याद आया? यस मैम। दे आर स्टार्टर्स। तो मेन कोर्स में वही दाल सब्जी रोटी जो हमें मिलती है, सैलेड, राइट? डेजर्ट स्वीट डिश हो जाती है। सो व्हाट दे आर सेइंग? They are saying 5 choices for starters, 15 for the main course, and 3 for the desserts. And the number of ways in which he and she can take this lunch. तो क्या करेगा? ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज खा के आ जाएगा। हम शादी में जाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैम 4 का ऑप्शन। फोर्थ Ma'am, B answer. क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो 5 into 15 into 3 बड़ा ही आसान था। 15 into 15 2 to 5 करेक्ट आंसर होगा, राइट? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट है? थम्स डाउन No, कर ma'am. दो। क्लियर है? थम्स अप कर दो, राइट? दैट्स ग्रेट। ठीक है। For her literature course, Rachel has to choose one novel to study from a list of 4, one poem from the list of 6, and one short story from a list of 5. How many different choices does Rachel have? 120. Okay, तो भाई 120 आंसर आ गया। लगा दीजिए इस पे वोटिंग। करेक्ट है सबका? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को नहीं बोला कि भाई या तो वो पॉइंट लेगा, उसको तीनों चीजें लेनी है। जब सारी चीजें लेनी होती है तो मल्टीप्लीकेशन होता है 4 into 6 into 5. Clear everyone? यस मैम। The total number of ways that can be formed using the digits 5, 3, 7 and only if no repetition is allowed, right? Do you know how to solve this question? Pujitha, Neha, Sameer. $27. Okay. $27. So सबका 27 आंसर है? Okay, let me check. Either you can make one digit number because they said total number of number. Either it can be 2-digit number, right everyone? Or either it can be 3-digit number. Clear? यस मैम। For 1-digit number, 3 ways are possible. For 2-digit number, 3 into 2, that means 6 ways are possible. For 3-digit number, 3, 2, 1, that means 6 ways are possible. Add them. How many total ways are possible? 15. Any doubt? नो मैम। 27 कैसे आया? बड़े बच्चों ने 27 आंसर दिया, भाई कैसे आया? रौनक का तो इतना ही आया था, 105 115, राइट? भाई 27 किसका आया था? कैसे आया था? क्लियर एवरीवन? यस मैम। Okay. Now we move ahead. That was about the addition and multiplication principle. Now very important topic, that is factorial notation. So ready everyone? यस मैम। Okay.
So my dear students, factorial notation means we have to multiply in the reverse manner till 1. All consecutive number. Let's suppose we are having 5 factorial. 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Only natural numbers. Let's say you are having 4 factorial. So it means 4 into 3 into 2 into 1, right? So 1 factorial is 1. In fact, 0 factorial is 1. Clear? Yes, ma'am. So you have to remind that 1 factorial is 1. 2 factorial is 2. We have to cram this. 3 factorial is 6. 4 factorial is 24. 5 factorial is 120. 6 factorial is 720. It's enough to be just remember till there. So let's have, if you have n factorial, आपके पास n factorial है तो आप क्या लिखोगे? n into n minus 1 factorial. ऐसा भी लिख सकते हैं n into n minus 1, n minus 2 factorial. In the same way, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial. It means n into n minus 1, n minus 2, and so on till 1. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's good. So n factorial is known to you. This was already known. 0 factorial and 1 factorial are 1. This was already, we learned that n factorial, n into n minus, and so on. We just keep on reducing one number until or till 1. So let's be quick. 1 factorial is 1. 1, 2 factorial is 2, 2. 2, 3 factorial is 6, 6, 4 factorial is 24, 24, 5 factorial, 120, 120, 6 factorial, 720. 720, 7 factorial, 860. 860. Yeah. Is it 5040? Yes, ma'am. You can multiply, Yes, ma'am. right? Then 8 factorial 40320, right? Cheating. And so on. I can't remind till my. So we already told you till 6 factorial we used to cram them, right? Clear? yes, ma'am. Okay. So let's see how to solve this. What actually students do now, students used to do, Dia, they used to do, put the value of 8 factorial and 5 factorial and they just make their question so much tedious. ऐसा लगता है यार इससे मुश्किल कुछ नहीं हो सकता था. पहले तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू ही नहीं याद होती है ना अवनी. पहले बैठ के और लिखेंगे कि मैम ने बताया था 6 फैक्टोरियल होता है 720, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसको 8 से कर लेंगे, है ना. So what we have to do, we have to write it in the reverse manner. That means 8 into 7 into 6. नीचे जहां पे फैक्टोरियल है वहां आके मैं रुक जाऊंगी. डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. ये गया. अब इसको मल्टीप्लाई करो. दैट मीन्स 7 6 42 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करा. 8 टू द 16 1 32 336 आपका करेक्ट आंसर होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Having any doubt? no, ma'am. No, ma'am. Clear to all? That's great. Harsh and Tanisha, good. आगे बढ़े. Yes, ma'am. ठीक है. Okay, take your time to solve this question. क्या करोगे? अवनी क्या करेगी? नेहा क्या करेगी? 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू को ऐड करेगी बैठ के. कॉमन ले लेंगे मैम. अरे वाह, राइट हर्ष, बिल्कुल सही बात है, कॉमन ले लेंगे.
So answer is ready. Okay, 45360 एक आंसर आया भाई मेरे पास. शिवम आंसर इज रेडी. ओके ग्रेट. अवनी का भी आंसर आ गया. आदित्य मैच नहीं हुआ. क्या कहते हो? कुछ ऐसा करा होगा आदित्य, 7 फैक्टोरियल कॉमन लिया होगा तो 1 + 8 आया होगा. Yes, ma'am. 7 फैक्टोरियल इंटू 9. हर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने अभी पढ़ा 5040 थे. अगर किसी को नहीं भी याद तो भाई ऐसा लिख लेना कि 6 फैक्टोरियल 620 है इंटू 7 इंटू 9. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्या कहते हो? सही बात बोली. इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा. और आंसर कितना आएगा ये मैं टैली कर देती हूँ भाई. आंसर कितना आएगा? जो बच्चों का सेम आया था वही आंसर आएगा. राइट? यस. इसको कैसे करेंगे? सो व्हाट्स अप्रोच? 49. कितना आएगा? 49. ओके 49 कह रहे हैं. करेक्ट आंसर है जी 49. बताइए. 49. हर्ष और रौनक का 49 है. रेस्ट एवरीवन बी पार्टिसिपेंट. शिवरम, समीर, आप लोगों की तरफ से आंसर्स नहीं आ रहे हैं. वत्सल, तनिषा, अनुराग, आर्यन, अवनी. Neha ji, what's answer? Lohit, what's answer? Okay, 49. Aryan said 49. That's great. Udita. Sameer also said 49. Neha also said 49. That's great. 49 is the correct answer. Let's see who's going to tell me the approach. What's the approach for this question? हम पहले 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, फिर So जो it's बटा 1 plus 1/6 is equals to x upon 42 is left. यस मैम. Okay. Then 7 by 6 is equals to x by 42. यस मैम. 6, 7, the 42, x is 49. That's it. यस मैम. Correct. So everyone, this approach only, or you have make the approach like this: 1/120 plus 1/720 is equals to x upon 504. Is it so? Anyone? Yes, ma'am. कौन कर रहा था ऐसे? भाई कौन थे? आर्यन, आपने ऐसा करा? मल्टीप्लाई नहीं किया, फैक्टोरियल में रख के काट दिया. ओके भाई, ऐसे मल्टीप्लाई करके किसने करा? मेरे को पता तो चले ना. रौनक ने करा है? नहीं मैम. अच्छा. तो बच्चे कोशिश करिएगा कि फैक्टोरियल में पहले फैक्टोरियल को ही काटने की कोशिश करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन को आसान कर देगा. अगर हम फैक्टोरियल्स की वैल्यू पुट कर देंगे ना, अवनी दिया, देन द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी क्वाइट टीडियस. ऐसा लगेगा भाई इससे मुश्किल कुछ नहीं है. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. देन लेट मी नो व्हाट्स अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. टेक योर टाइम. फिर मुझे इसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक बताना है. फर्स्टली यू सॉल्व दिस क्वेश्चन and let me know how to solve. थ्री आएगा मैम. Okay, Harsh and Ronak said 3. 3 is the correct answer. Yes, ma'am. 3 I read.
Okay. 3. 3. 3 is the correct answer, everyone. Okay. So what's the approach for this? Have you write backward to bigger factorial? That means n plus 1 factorial is the biggest one. So I can rewrite it as n plus 1 n into n minus 1 factorial, bacha party. That will be equals to 12 into n minus 1. I guess here something is missing, right? It should be factorial, right? Clear? So factorial and factorial is cancelled. N into n plus 1 is equals to 3 into 4. Smallest number here is n and here is 3. So n is equals to 3. Is this was your approach or you make it quadratic? किस किसने ऐसा ही करा, किस किसने क्वाड्रेटिक से करा? तनीशन ने सेम अप्रोच लगाया, रौनक ने भी यही लगाया. क्वाड्रेटिक से किसने करा वो हैंड रेस कर लीजिए, और जिसको ये अप्रोच नहीं आती वो भी हैंड रेस कर लीजिए. अवनी क्वाड्रेटिक से करा? Yes, ma'am. ओके. दिया क्वाड्रेटिक से करा? Yes, ma'am. ओके. तो बच्चा देखो, जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं ना, वो आपको यही हेल्प करते हैं कि भाई हमें क्वाड्रेटिक से बचना है. क्योंकि आपको क्या करना है, जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात होगी ना, जो आपका कांस्टेंट नंबर होगा वो हमेशा से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक होगा. आपको दिखा 12, आपने देखा 12 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करने हैं, तो कौन से वो दो नंबर्स होंगे? व्हाट आर द टू नंबर्स? 3 into 4. इधर से छोटा नंबर उठाया n, इधर से छोटा 3, तो डायरेक्टली n की वैल्यू 3 आ गई. क्लियर? Yes, ma'am. देखिए इसको सॉल्व करिए सेम मेथड से जो हमने अभी करा है. Ma'am, 4. मैम आपका माइक सो n प्लस 2 को आपने बैकवर्ड लिखा टिल n फैक्टोरियल. n प्लस 2 n प्लस 1 n फैक्टोरियल is equals to 13 to n factorial. n factorial is cancelled. Smallest number n plus 1, that is equals to 5. So n is equals to 4. Clear to all? Yes, ma'am. Anyone? Any doubt? No, ma'am, no doubt. No, ma'am. Clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's have some practice problems.
You can just start the solving, right? See, start with your solving. Screen is visible now. Yes, ma'am. Okay. Do these two questions. Yes, done. Dear students, done all the questions? Yes, ma'am. Okay. So let's discuss. Very first, Two. so very first answer 2 I got. Is it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I guess your approach was quite simple. So 12 minus 10. It's a simple 2 factorial, that is 2. Quite simple. Or anyone done 12 factorial minus 10 factorial? Is it so? No, ma'am. Okay. Then 13 factorial divided by 10 factorial. Answer is? 1716. Okay. They said 1716. It means 13 into 12 into 11. Right, everyone? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट था इसमें?
Okay, next one. मैम इक्वल नहीं आ रहा. Equal नहीं आ रहा. तो you're saying not equal. Everyone agree? Yes मैम. Yes, ma'am. Next. So next बताइए फटाफट. 28, ma'am. 28. So what's the approach for this 28? मैम 6 फैक्टोरियल को काट के 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया. That's correct. भाई सबने ऐसा ही करा. Yes, ma'am. ठीक है. Next. 64. 64. 64. सबका ये आंसर है 64. Yes मैम. Yes, ma'am. ठीक है. Then the next जो evaluate करना था. 30, ma'am. First. 30. Okay. Next one. 15,120. ओके. तो भाई इन सारे क्वेश्चंस में किसी को भी डाउट, एनीवन, No मैम. कंफ्यूजन कुछ? तो ये बेसिक किसके क्वेश्चन थे आपके? फॉर्मूला बेस्ड थे, राइट? Yes मैम. Yes, ma'am. आगे बढ़े. Yes Yes, मैम. ma'am. ठीक है. ठीक है. तो आगे बढ़ते बढ़ते ना आज की क्लास में आपको एक चीज सिखा के जाती हूँ. क्या? जेई में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रैंकिंग ऑफ अ वर्ड. आप लोगों ने देखा होगा, राइट? Yes, ma'am. डिक्शनरी रैंक निकालते हैं ना आप लोग. किस किस ने सीखा है अपने स्कूल में? डिक्शनरी रैंक निकालते हैं ना. लाइक मुझे दिया का डिक्शनरी रैंक निकालना है, तो आपको याद है ना वो कैसे देखते हैं कि दिया का कैसे होगा, नेहा का कैसे होगा? क्या कहते हो? किस किस को आता है वो? सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मुझे दिया का ही डिक्शनरी रैंक निकालना है, ठीक है जी? तो लॉन्ग अप्रोच, अगर एनीवन जिसने स्कूल में अटेम्प्ट करा होगा उसने ऐसा करा होगा कि सबसे पहले फर्स्टली ए विल कम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो Yes ए मैम. विल बी फिक्स्ड, देन ऑल द थ्री विल बी permutated. So 3 factorial. Then D. So I need to stop on D only क्योंकि D ही मुझे चाहिए था. Then A. अगर A पे फिक्स हो जाती हूँ then 2 factorial. फिर D के बाद मेरे पास क्या आएगा? D is used. इसके बाद क्या आना चाहिए था? I. I पे मुझे रुकना है. अब I के बाद मेरे पास आना चाहिए था A और फिर Y. तो इसका 1 और फिर Y और A यानी कि 1. अब इसको काउंट कीजिए कितना आया? 6 2 8 1 1 9 10. सो दिया का जो रैंक है डिक्शनरी में 10th आएगा. किसी को समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? जेई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, Yes मैम. किस किस को पता चला? मैम बट ये समझ नहीं आया. समझ नहीं आया. दिया, आपने जब अपनी एनसीईआरटी भी करी होगी, आप पीवाईक्यूज करे होंगे, मतलब स्कूल लेवल पे जो पेपर करे होंगे, तो माइट बी योर टीचर आस्क कि एक बहुत ही कॉमन था कि अगेन में नागी का रैंक बता दो कितना आएगा. इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल बाय एवरी टीचर एवरी सिटी, है ना? हर्ष हर्ष को याद आ गया. मैम एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी नहीं की. तो अगर आपने आरडी शर्मा करी है तो उसमें तो होगा ही होगा. आरडी शर्मा आरटी शर्मा भी नहीं की मैम मैंने. क्या करा फिर? कुछ भी नहीं. मैम मैंने आईसीएसई की बुक्स की हैं. अच्छा, आईसीएससी की बुक्स करी हैं. आरएस, तो आरएस में भी होगा. तो ओके दिया, देखिए हमें क्या करता है जेई, क्या करता है जेई, हमें एक वर्ड दे देता है, ठीक है? क्या देता है? वर्ड. और जेई आपसे पूछता है व्हाट विल बी द रैंक अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी.
कि जो ये वर्ड है अगर इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज करके अरेंज करना शुरू किया जाए तो उसका रैंक कितना आएगा। ठीक है दिया? ओके मैम। ठीक है, तो अब अगर दिया का देखेगा, दिया में से सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो कहाँ जाएगा? ए पे जाएगा। डिक्शनरी देखिए ना आपने, यस मैम। तो सबसे पहले वो ए पे जाएगा। ठीक है, जब वो ए पे गया तो ए रुक गया, ए को स्टेबल कर दिया, बाकी तीन चीजें परमुटेट होंगी। फिर डी पे जाएगा, डी रुकेगा, फिर उसके बाद अगला लेटर आप देखोगे क्योंकि डी आपका मैच कर गया कि डी ही मुझे सबसे फर्स्ट चाहिए था, देखो नाम से। क्लियर? तो ये तो एक लॉन्ग अप्रोच थी बच्चों। ठीक है, ये सबको आती है लॉन्ग अप्रोच, यस मैम। पर मुझे तो सिखाना है ट्रिक। अगर अब दिया का रैंक मुझे ट्रिक से निकालना होता ना रौनक, अब अच्छा यहाँ बैठे किसी भी बच्चे को ट्रिक आती है कि कैसे कर सकता हूँ बिना इतना लिखे हुए, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड? नो मैम। नो मैम। अगर मुझे दिया का रैंक निकालना है तो दिया को ऐसे लिखूंगी, अल्फाबेटिकली इसको नंबर दूंगी 1 2 3 4। ठीक है जी, यही होते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब Yes, इन ma'am. नंबर्स की राइट साइड पे देखो, दो से कितने छोटे नंबर है? हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन 2? एक है। हाउ मेनी नंबर्स आर स्मॉलर देन 3 ऑन द राइट साइड ऑफ 3? 1। 4 से स्मॉलर 1 और इससे स्मॉलर 0। अब यहाँ पे देखिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। दीज आर द टोटल परमुटेशन। प्लस 1 कर दीजिए, आपके पास रैंक आ जाएगा। ट्रिक समझ आया? मैम एक बार और समझा दीजिए। देखिए नेहा का निकालते हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4, रैंकिंग करेक्ट करिए। यस मैम। How many numbers are smaller than 4 on the right side? 3. How many numbers are smaller than 2 on the right side? 1. How many is 1 or 0? So let's say 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. So 3 into 3 factorial plus 1 into 2 factorial plus 1 into 1 factorial and add at the end 1. So this will be the rank of Neha. 3 into 6, 18 plus 2 plus 1 plus 1. 20, 22. So your rank is 22nd. Ma'am, why you took E1 as 1? कहाँ पे 1? मैम ई को आपने 1 नंबर क्यों दिया है? मतलब ई जैसे को अब 1 एन को नहीं 3 दिया, दिया है। नहीं नहीं 1 नहीं दिया। आप देखिए ये नीचे जो नंबर लिखे हैं ना इस रो में, वो ये लिखे हैं कि भाई इस ये जो नंबर ऊपर आए ये अल्फाबेटिकली है। कैसे हैं? अल्फाबेटिकली। Alphabetically. इनके अकॉर्डिंग अब हमने देखा कि 4 से राइट साइड पे कितने नंबर छोटे हैं? 3 है, तो वो 3 लिखा है। 2 से राइट साइड पे कितने नंबर छोटे हैं? एक है सिर्फ 1, वो तो 1 लिखा है। 3 से कितना छोटा है? 1। 1 से छोटा तो कुछ है ही नहीं, तो 0। मैम पर 3 से छोटा तो 2 नहीं होना चाहिए? राइट साइड, राइट साइड। ओ राइट साइड। ओके मैम। क्लियर है सबको? Ma'am, if letters are repeated, then how to sequence? अरे वो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी हम परमुटेशन के उस लेवल पे नहीं गए, उसमें आपकी रेपिटेशन आएगी। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया ताकि जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे और जब आप लोग अगर PYQs उठाओगे ना 2023 के, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ ही रैंकिंग बेस्ड मिलेंगे और आपको आज के बाद लगेगा कि भाई मेरे को ये 6 क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना? जो आप बोल रहे हो कि भाई रेपिटेशन वाला, वो रेपिटेशन वाले की बात हम बाद में करेंगे जब हम रेपिटेशन के बारे में बात कर लेंगे। क्लियर है? Okay, ma'am. अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अब आपको अच्छा सा नंबर देती हूँ। मदर, इसका रैंक निकालिए। मदर का रैंक निकालिए, मंडे का रैंक निकालिए। ठीक है, और रैंक निकाल लीजिए रौनक का, रैंक निकाल लीजिए हर्ष का। हर्ष का नहीं निकालेंगे, हर्ष में 2 आ गए ना। और कोई बच्चा है क्लास में जिसका रेपिटेशन नहीं हो रहा? अब सब अपने अपने नाम चेक करो किसमें रेपिटेशन नहीं है।
गौरव, लोहित। चलिए फटाफट, बी क्विक, इन 5 के 5 चीजों का रैंक निकाल के बताइए। So ready with your answers? Ready? ओके, मदर का रैंक बताइए। रैंक ऑफ मदर। 309 मैम। ओके, सो एवरीवन कोई और कंफर्म कर दीजिए भी 309 आया या नहीं आया। Yes, ma'am. 309. Okay, so what I will share these names, either you can go ahead or can take any other name whose no repetition is there. Just go ahead and start solving these things, right? These are the tricks. As I told you, permutation combination is quite vast chapter and it's a very important chapter from the JEE perspective. So we will try our best so that with the basics only we can every day learn one of the trick. Clear? Yes मैम। Okay. So I guess you guys are able to know or able to tell what's the concept today. It was a basic addition and multiplication principle, Yes मैम। right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Along with that factorial notation Factorial notation. and one trick for rank, Yes, ma'am. right? It's a very important trick, right? So now Yes, you ma'am. implement these parts. Yes मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are some basic problems for your homework. Will you able to complete these things? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. Yes. Yes. मैम आप बच्चों को बोल देना कि अभी क्लास लीव ना करके जाए, गूगल फॉर्म फिल कराना है एग्जाम्स जी के जी, रिलेटेड। श्योर श्योर श्योर। डियर फ्रेंड्स, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, आप लोग क्लास लीव मत करिएगा। मोहित सर ने आपसे गूगल फॉर्म फिल करवाना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम डेट्स। ओके ओके मैम। ओके Okay, ma'am.